Namaskar, Sayarni. Namaskar to all our viewers. Thank you so much for joining back to this podcast. Today is the fourth episode of this podcast that we call Panditocide Watch. And as you all know, this podcast is part of this year's Kashmiri Pandit Holocaust Month 2024. And we have dedicated this podcast this year to the theme of recognition of Kashmiri Pandit genocide. We'll be talking to experts through these podcast episodes regarding various aspects of this issue and issues that touch upon this theme of recognition of Kashmiri Pandit genocide and the importance of such a thing happening. When unique crimes against humanity occur, when tragedies like genocide unfold in civilizations, in modern societies, there is always a natural demand for justice. But does justice really only mean a slogan, or does there need to be more substance to it? Because it must not be in a modern society coincided with revenge. So, justice in any democracy or a modern society is always expected to happen through law and through courts. There must always be a legal framework available in any democracy to address a special crime like genocide. Today, we'll be talking about various aspects that cover this legal perspective about genocide and whether or not India has sufficient laws to address such a crime. Today, we have with excuse me. Today we have with us Advocate Siddharth Acharya ji. Siddharth ji, welcome. Welcome to the Namaskar. podcast. Namaskar, Nitin Siddharth, ji. namaskar. Siddharth Acharya ji has also, I want to put it on record, he's been a great friend. Not just my friend, but a great friend to the Kashmiri Pandit community. I know him for many years now, and he has been standing in solidarity with the Kashmiri Pandit cause for justice. He has taken many steps and initiatives in this direction as well, but also as an advocate and from a legal point of view, he has come forward and tried many times, made several attempts to initiate investigations in the killings of Kashmiri Pandits and help the community in whatever best way possible. He is a practicing advocate in the Supreme Court of India. And today we'll be talking about the legal perspectives and how a crime like genocide needs to be dealt with in a democracy. So, the first question that I would ask you, Siddharthji, is I want to understand also from a personal perspective if you could tell us about how you got to know about this Gori genocide, how did you get to connect with the Kashmiri Pandit community, and what really motivated you to help the community to come forward and take various efforts that you have, including I remember that you had made a documentary about this issue long back. And I remember so many conversations with you and the kind of passion I could always sense in you towards the rights of Kashmiri Pandits and towards justice that has not only been delayed but also denied till date. If you could just take us through your journey and how you got connected to this cause in your life. Thank you so much, Nitin, to have me and to make me speak on this subject, something which is very close to my heart and my soul. And whenever I speak on this or whenever I ponder on this issue, I really feel that there's a lot which needs to be done. There's a lot which could have been done in the past, but unfortunately, that has not been done. And I mean, today in this lecture, it's pretty academic lecture, so we're not going to put blame on somebody, but at the same time, trying to find a recourse where how we can, improve the future, this thing, our actions to strive with justice. Now, interestingly, this was a very reason, but today we are talking about genocide. I, as a law student back in the second year of law, had started reading about, the constitution of International Court Tribunal (ICTY), the International
crime tribunal for Yugoslavia, and Rwanda. So when I started reading about how the crime against humanity had taken place in countries like Rwanda, in countries like Yugoslavia, and before that also I also happened to read a lot about the constitution of the trial of Tokyo trial, which actually had commenced after 1945 Second World War, both Tokyo trial as well as the famous Nuremberg trial. So there was a lot of curiosity in me as a law student to understand how these trials function. Now, what is genocide? How genocide has to be dealt by a country, which is whose foundation has been laid on the democratic principles, or something country whose constitution has is a replica of Universal Declaration of Human Rights. The UDHR is the soul of the Indian Constitution. We talk about the Bill of Rights when we talk about. And what really amazed me was, the soul of the Constitution is UDHR, the Universal Declaration of Human Rights, Bill of Rights. Still, as a democracy, as a country who is the largest democracy, I would say, and has got a strong ethos and beliefs, and has a lot of what do you say? They upholds the Indian Constitution. They also don't have a proper mechanism to address a crime like genocide. So these were the reasons why I chose to dwell too much into the detail. And when I saw what happened with the Kashmiri Pandit community, I linked both the things, and that was the reason why I chose to do a documentary film. I never came from a film background. I never came from a any journalism background. As a law student in strive of justice, I started reading, taking out a lot of documents, met a lot of people at that time in Bombay, especially the grandson of Justice Neelkant Ganju, also family relatives of Mr. Premnath Bhatt. So I went through this whole, this chronology of situation that happened, how the riots broke out in Anantnag in 1986, followed by the insurgency in 1989 and 1990, when the lot of killings that had happened. Now, the thing is, for audience, it is also very important to understand. A lot of people who are from Kashmiri Pandit community, they know this, what happened. But people who don't know, they has to be aware about the killing that has happened was not only the killing that happened in 1989, 1990. It's something which has been going on through generations. So when we say that the killing, if we take the cutoff date for the genocide that has happened, it has not happened since 1947. It has been happening since past 8 centuries. I would say that 1398. So this especially with the agenda of exterminating or killing a particular community over the period of time is something what is defined as genocide. Now, international community at times has over the years have evolved with the way they have to address the concerns of genocide. And we, being somebody who have been chest beating over the years, that yes, we are the ones who are always stood for the justice, who always ensure that we have a vibrant judiciary, is something which has completely denied the justice to Kashmiri Pandit community. And also, unfortunately, the thing is, we'll dwell into Article 370 and the judgment which has recently come. So there was a observation by Justice Sanjay Kishan Kaul, which I will come on to that later on. But briefly, if I just have to explain, there's a Truth and Reconciliation Committee also that has to be asked to be formed, but still there's no clarity on how it has to be constituted, how it has to be made. So a lot of ornamental things have happened over the years by the state, by the judiciary, but there's nothing concrete legislation. There's no concrete legislation to address this such a heinous crime that has happened in the independent India and pre-independent India. So this is something which where with this objective at that time back in the college, I decided to make the documentary. I also went and tried to understand the aspect of how community can be dubbed as a IDP, internally displaced people, something in the accordance with the international law. Whether India is being a ratified member of 1959 Genocide Convention, yet we don't have adopted the laws where we as a country, most of our laws from has been taken under Article 50
We have adopted a lot of UN resolutions. We have adopted a lot of United Nations guidelines when it comes about our Prevention of Money Laundering Act, whether it comes about combating the Narcotics and Psychotropic Substances Act. So all the laws when we are taking from the United Nations, we are adopting their being a ratified member, we are adopting their laws, being an international binding obligation. We are still not being able to address the major concern of genocide and the worst kind of a genocide that has happened. Right. And the convention that you just mentioned uh, was also sort of initiated. I mean, India was part of the initiation Exactly. of the Yes. convention. Yes. 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 I was reading about Dr. Raphael Lemkin, who was Yes. the architect of this Right. convention. I have heard one of his in one of his interviews. He mentions that he went to almost every country in the world to seek support for bringing this particular crime into notice, into Exactly. international notice, Correct. and having an international law on it. And there were only three states at that time, which was Cuba, Panama, and India, Yeah. that Exactly. helped him bring this. So India Exactly. was a co-sponsor in Exactly. bringing this UN convention, Exactly. to make it realize. Yeah, Exactly, exactly. I mean, we rely on so many conventions to adopt our own laws. yeah, At the same time, and I personally believe, and I'll go up to the extent of making a statement on your show today, that the failure of acknowledging genocide raises question mark on the capability of our judiciary. I will go up to that extent where I have to say that, because if you cannot acknowledge the ethnic cleansing of a particular community as per your own law, and forget about law. I mean, there's something which we are going to be discussing is about the legislation and the bills, other things. Indian judiciary is not only restricted to the legislations. Unfortunately, there has not been an observation made by any constitutional judge so far. You make so many observations, you try to trample into the authority of the legislation, the authority of the parliament, yeah. the encroachment of this thing happens, but the judicial overreaching is so prominent. At the same time, they still have not been able to acknowledge something that has been happening in front of their eyes over the years. To understand this in a better way, I'm just curious to know uh, whether there is a necessity. I'm just purely talking from the acknowledgement point of view, because it's very interesting. uh, India already is a ratifying party to the United Nations Right, right, convention, right, right? right, right, right. So so just tell me if I'm understanding this correctly, and also for people to know, that means that India obviously recognizes genocide as a crime, right? We are under So obligation. does I will go up to the extent we are under obligation. obligation, no, no, we are Yes, yes. obviously under obligation under the convention to bring a special law, but Right, I'm right, right, talking right. purely about recognition by the Exactly, judiciary taking exactly, cognizance. So exactly. if you could shed light on this, does the convention also empower and leave no scope for any vagueness in Exactly, front of the judiciary to take cognizance of genocide? exactly, exactly, exactly. Yeah, if you could just elaborate on that. I mean, what are your observations? Where do you think is that, where are the leakages? What do you think is the problem and the Yeah. challenge or the loophole that in 34 years, we're close to 35 years uh, of this genocide? What do you think is the challenge in front of the judiciary, or the reason behind them not even taking cognizance? Yes, I'll tell you. So the problem with the Indian institutions, and when I talk about the institution, I don't restrict myself only to the judiciary. Right, I also talk about the deep state, right, about the challenges which deep state and the Indian state always has been facing. See, the problem is that we are very conscious in the international community as in how we project ourselves, and there's a facade which we have created, and I'll be extremely unfiltered about what I'll be sure, please, speaking please. on this. Yeah. That's I think that'll be the best. Exactly. The thing is that with the deep state, with our institutions, it has been a problem. Our institution, I mean, there's one genocide is one thing which we are discussing.
I want to understand what has been happening since between 1989 till 1996 in Kashmir for 7 years. A lot of killings had happened. A lot of issues had taken place. The rapes have been committed. The situation was more like a place, a country like Rwanda or Yugoslavia or Chechnya or something like that. Yet they failed to acknowledge it. The reason was that they wanted to show in the international community that it is not Kashmir. We are taking, I mean, this is a big state and we have a lot of complex issues that have been going on in the Northeast. And, at the same time, the Tamil issue also happened. The Yeah. Tamil genocide also happened in the early 90s. I think it was almost at the same time. So the issue is that if we pick on one issue, we kind of acknowledge that yes, India is a country which is something where which is in a way I would say is endorsing, I won't say endorsing, but is admitting the fact that It's there are sensitive. It's sensitive enough. exactly Yeah. exactly. So that projection was, and that this whole habit of projecting ourselves as a state, who has not got into this, who is not into, I mean, you have to acknowledge first of all, I mean, until and unless you don't acknowledge a problem, you cannot go and resolve the issue. So when you cannot acknowledge the problem, the justice is something which is a very far-fetched dream. So that is what has happened. I mean, today, for example, I mean, today UNHCR is playing a very active role in India. UNHCR has been dealing with issues pertaining to Chin refugees. It is dealing with issues pertaining to Rohingya refugees. It is dealing with issues pertaining to Tamil Afghan refugees. But they are not acknowledging the issue of the genocide that happened with Kashmiri Pandit community. They have not acknowledged the genocide that happened with people in Northeast, the Hindu community. So there is a particular lens through which victimization has been seen, and this victimization and this whole categorization of the victim, this thing has is particularly reason because of a lot of particular vested interest, a lot of geopolitical issues, which and where India as a country they want to project themselves as something, that there's nothing, these kind of issues have never happened with us, because admitting the fact that genocide has happened in India somewhere puts a blot on the Also implies that the state allowed it to happen. exactly. So this was a state failure. So they don't want to represent their failure in front of the world. Now, unfortunately, the people who used to talk about the state failure when they were in the opposition, they are also doing the same thing when they are again becoming the part of the government. When they have taken and usurped the state power, they are also using the same narrative which their predecessor used to use. I'm not taking the name of any political party, but all I'm saying is, so there's not admission. So they also start talking about the same thing when they used to stand with us at Jantar Mantar back before 2007-8. Yeah. They used to nod on every single thing which used to talk about. They also used to talk about why India has, I mean, the genocide bill should come, the genocide Yeah. commission should be formed, the committee should be formed, this, that. There are a lot of ornamental things which used to be talked about. But when they usurp the power in the center, they are not addressing those issues. They are also You know talking. what I just got reminded of. I Yeah, again got reminded of your documentary, yes, and it just gave me the flashes of the individuals who have so much power right now, who are in right, that documentary, right, and who have spoken out rightly, and they have actually called a spade a spade. correct, correct, But correct. today, when they've assumed power, it's as if the issue doesn't exist. It doesn't exist. Yes. It's Then the there's so much indifference. then the issue is only to narrative, to counter narrative, give the counter Yeah. narrative of What any about me? other. मतलब तुमने Yeah, ये what किया, इन्होंने ये exactly, तो किया. हमने हाँ, वो किया, बस वही बात है. So that right. so that is the reason, and that is the fact that the whole issue of KP genocide at this moment has just been used as for water boundary. That's all. And that's a very hard fact which we have to accept. Yeah. So, So, so as far as the impression, the international impression is concerned that you were talking about, we come across this particular thing a lot actually, like within the right, community also when we discuss about recognition, we do acknowledge and we also understand that it's not an easy thing to do if we just look at it from that perspective. But don't you think that someday or the other,
this issue will need attention, Of course. it will demand addressal, Of course. and at the same time, the more delay there is, it will become even more complicated, because Yes. then when there is a change of power politically, Right. Right. when right now the dispensation has a very valid reason to say that it was not us who were denying, it Yes. was so and so who denied it, they called you these names, we always spoke for you, and therefore we recognize what happened with Correct. you. Correct. 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 But more time, as and when more time passes, do you think that that will create more complications as far as this international image is concerned? Absolutely. Absolutely. Because the thing is, first of all, now the issue is almost 34 years old now. I mean, it's been 34 years since, I mean, almost one generation has gone. Somebody who was of your age at that time, who had to flee from his house, is in mid 60s or is something. is is retired right He's now, retired right now. Correct, 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 correct. So the thing is that the generation, when the next generation comes, what happens is that when I also interact with a lot of people from Kashmiri Pandit community, especially the kids of age who are less than 25, they, most of them, and I can say that because with a lot of authority, because I meet a lot of sure, Kashmiri Pandit people, sure. I still feel that more than 50% of people don't have that consciousness to go back or to return. They're losing that. So this whole cultural genocide also is a very important thing. I mean, It's a which we can all, consequence, it's it's a a consequence, consequence. it's a byproduct. It's a byproduct which is Yeah, happening. yeah, yeah, So absolutely. yeah, yeah, and the thing is that when I talk, and especially when I talk to the young kids who are staying abroad, I mean, somebody who's staying in India or staying in Delhi or Jammu for that matter still has that hope that maybe one day I'll return. Or they're just chalking out a plan. You can debate on this whether the plan is feasible or not feasible. That's a different point of discussion. But But they're aware, aware. they're aware of it, huh. But somebody whose family has migrated to, let's say, Johannesburg, or for that matter Canada, or they don't have that consciousness. They have come on terms with the fact that there's absolutely no possibility of return, and the more it will be delayed, the voices will be shut down. But The then more that is precisely what a genocide perpetrator aims at. exactly, exactly, That is precisely what the genocide perpetrator aims at. exactly, They just exactly. want to consolidate the environment, Yes, in this case in Kashmir, and yes, they want to have a situation where in the next couple of generations there are no takers, yes, yes, because memory also has a life. yes, yes. And Correct, correct, correct. I strongly believe that a culture in its true form, in whatever form it's left, can only breathe uh, in its natural habitat. If the Absolutely, absolutely. ecosystem of the culture is gone, the culture It is cannot gone. Then survive. it's just superficial. Then It, it's just symbols, and it's right, it fades away with time. right, 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 But I mean, I will also add that there are people who have done enormous work in this right. Mhm. community, and Of I'm course, not of course. saying this only because No, no, I'm a no. Kashmiri Pandit, Of course, but there are so many people, of so course. many cultural activists. I mean, I don't want to name a few because there are No, so many. There are people who have worked on the Sharda script absolutely, so absolutely. much, so much so that today, in last few years, we have thousands of people, not just Kashmiri Pandits, but so many people across India who have learned this script. That's how it You know, is. uh, so there is that kind of consciousness, but Mhm. it is also Consequences. the consequence of being a victim of such a crime like genocide, that cultural essence uh, Yes, gets lost with every absolutely, generation. Yeah, yeah. absolutely. So But that, coming back, yeah, yeah, please add. yeah, please, 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 please. No, no, I was just moving on to something else. If you want to just add something. No, no, nothing, nothing, nothing. We can move. So coming back to the legal perspective, uh, there is a record from Rajya Sabha, and I have it with me. If anyone wants to see it, we can provide that also. Uh, where the current MOS home had, in an answer to a question raised by a certain member parliament on genocide, in the answer, and I'm just paraphrasing it,
it was mentioned that it just intrigued me because I thought that it needed more explanation and people needed to know. Because you come from this background, maybe you can make us understand better. So, what was being implied in that answer by MOS Home was that yes, India has ratified to the UN Convention, so we acknowledge it as an international crime, and we it was implied that there is no need for a special law, and therefore it was mentioned that the IPC and the CRPC are sufficient enough to take cognizance of acts that amount to crimes which may be like the crime of genocide or something like that. And I just want to put it on record that I have in fact shared this particular document with you, and so that people know that we actually spoke about this. And now if you could shed light on this particular issue and tell the audiences, और अगर हम इसमें हिंदी में बात करें तो और भी अच्छा होगा अगर हम हिंदी इंग्लिश को मिक्स करें, क्योंकि That's fine. I'll आम keep it जनता bilingual. आम I'll keep जनता it आम bilingual. जी, तो अगर हम इस चीज पर बात करें, और मुझे लगता है ये इस पूरी वार्ता का सबसे मुख्य एक सेगमेंट होगा कि जो लॉज भारत में इस समय हैं, क्या वो सभी लॉज, क्या वो सभी कानून सक्षम है जेनोसाइड जैसे क्राइम को एड्रेस करने के लिए? हमारे केस में कश्मीरी पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसको रिकॉग्नाइज तो ठीक है, बट जस्टिस विच मींस पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ दैट क्राइम, any law for such a heinous crime, also punishment basically is a deterrent, you know. Correct. क्या हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून, आईपीसी, सीआरपीसी या और भी जो नए कानून आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कानून है जो जेनोसाइड जैसे लॉ, जो जेनोसाइड जैसे क्राइम को एड्रेस करने के लिए सक्षम है? नितिन जी, मैं एक थोड़ा इसमें बात करूंगा। तो हमारा जो कानून है अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो डेटरेंस नहीं होके, मतलब डेटरेंस होना चाहिए, जिनके लिए डेटरेंस होना चाहिए वो उनको लेके रेफॉर्मेटिव हो जाता है। जो हमारा एक जो एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, तो उसमें ये है कि इस तरीके का जो हीनियस क्राइम है जेनोसाइड का, जी, अगर आप जेनोसाइड के क्राइम में अगर आपको पनिशमेंट देना है, आपको किसी को पिनलाइज करना है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द लॉ शुड बी टू डेटर कि ये चीजें वापस नहीं हो। होता क्या है, अब आप ये सी में जो आपको इंस्टीट्यूशनली जो, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा एम्बेडेड है एक सेल्फ पिटी में, एक वो जिसे कहते हैं कि एक अच्छा बनने की चाह में, एक अच्छा, एक जिसको अपना एक प्रोजेक्शन की चाह में, वो लॉ का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो जाता है। तो जब इंडियन पीनल कोड आया, सबसे पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट आंसर आपके सवाल का जब मैं दे दूं तो वो ये है कि इंडियन पीनल कोड जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ था, बिकॉज अब जो है भारतीय न्याय संहिता जो न्याय है उसने संहिता, रिप्लेस कर लिया उसको, बिल्कुल हाँ। इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता था। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव वाज कि भाई, क्योंकि एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन था, ब्रिटिशर्स ने 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके बाद में वो एक कानून लाना चाहते थे जिससे जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हो वो तो रिसीविंग एंड पे हो, और जो बाहर के लोग हैं वो कानून बनाएंगे जो सन ऑफ द सॉइल है उसको कर्ब करने के लिए। दैट वाज द फंडामेंटल, ये था प्रीफेस था इसका। उसमें आपने दंड संहिता में आपने जो है इंटेंट वो था आपका कि आपको जो व्यक्ति है उसमें जो उस वक्त के जो सोशल हालात थे उसके हिसाब से आपने लॉज बनाए। इंडियन पीनल कोड टिल द टाइम इट वाज इन सेशन, इट वाज एक्टिव टिल 2023 रिसेंटली, इट नेवर कवर्ड, इसने कुछ भी ऐसा कवर्ड नहीं था कि वो इतने मास क्राइम को, जेनोसाइड जैसे क्राइम को वो एड्रेस कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, जो हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है, दैट आल्सो हैड लॉट ऑफ लूपहोल्स। वो 1973 का लेजिस्लेशन है, ओवर द इयर्स वो इट हैज बीन अमेंडेड आल्सो। उसके अंदर भी इतना टीथ नहीं था कि वो इस तरीके के क्राइम में प्रोसीजरल लेवल पे उन चीज़ों को हैंडल कर सके। ये तो हुआ यहाँ की बात। आप कश्मीरी में भी बात करेंगे तो जो रणबीर पीनल कोड था, यूज्ड टू एग्जिस्ट बिफोर 2019, ऑब्वियसली वो तो महाराजा के टाइम का लॉ बना हुआ आया था, तो वो भी इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम आईपीसी ओनली। दैट आल्सो डिड नॉट हैड एनी टीथ इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद इट। सो द थिंग इज, इस तरीके के सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपने ऐसे मैकेनिज्म आपके पास नहीं थे जिससे somebody who is at the receiving end can strive for justice। तो वही रीजन था सबसे पहले। तो आप जितने भी ट्रायल्स देखेंगे कश्मीरी पंडित्स के कम्युनिटी के,
ट्रायल तो एक चीज है, ट्रायल किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हमने अपने वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस को लेके अपने लॉज को इनेक्ट किया है, जैसे यूडीएचआर की मैंने बात की या बिल ऑफ राइट्स की बात की, उन कंट्रीज ने भी अपनी लॉ को इवॉल्व करते हुए जब न्यूरमबर्ग ट्रायल कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिन जिन जो जो प्रोसिक्यूशन हुए थे, जिन जिन अक्यूज, जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट पीस। क्राइम अगेंस्ट पीस है वो थोड़ा हल्का क्राइम था, नॉट हल्का इन द होल सेंस, बट it was literally this light crime compared to crime against humanity. Crime against humanity was something जिसके अंदर जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हिरोहाटो, उनको कन्विक्ट किया गया था। हम लोग जब उन पश्चिमी देशों से अपने लोकतंत्र को की जो है एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उनसे उनके जूरिस्प्रूडेंस को लेके, लेकिन जब वो इस तरीके के लॉज ला सकते हैं, इस तरीके की कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकते थे, हमने वैसा कुछ भी नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी हमने शह देना शुरू कर दिया, बिकॉज नैरेटिव इस तरीके से हो गया कि ये लोग जो लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे जेनोसाइड को लेके, वो तो भटके हुए नागरिक हैं, वो तो मिलिटेंट हैं, बिकॉज वो लड़ाई जो है वो स्टेट के अगेंस्ट जो है उनकी लड़ाई है, और स्टेट में जो है कई बार रेजिम चेंज भी होती है। तो आज अगर पावर में वो लोग हैं, कल को जो पावर में वो आएंगे तो वो उस चीज को अलग लेंस से देखा जाएगा। तो दिस इज द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस दैट हैज हैपेंड, वेयर somebody who has been accused, somebody जिसको दंड देना चाहिए था इस प्रवृत्ति के हिसाब से कि भाई इस व्यक्ति ने जो है यहाँ पे जेनोसाइड के इश्यूज में इन्वॉल्व रहा है, इसने कहीं ना कहीं मानवता का जो सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है जेनोसाइड को। जेनोसाइड इज द वर्स्ट crime that can ever happen in humanity. उस crime, some people call it crime of crimes. It's a crime of crimes, exactly. So the worst kind of a crime that can happen. एंड उस चीज को लेके अगर एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, तो ये कितना हॉलो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके ऊपर ये बात सवाल उठाता है। रही बात आईपीसी और सीआरपीसी, दे आर नॉट द एडिक्वेट लॉज, तो ये बात तो मैं नितिन जी आपसे एकदम सहमत हूँ इस बारे में। जब आपने मुझसे सवाल पूछा, देयर हैज टू बी अ लेजिस्लेशन व्हिच एड्रेसेस दिस इशू, एंड व्हेन वी से दैट इट एड्रेसेस दिस इशू, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस भी इंस्टीट्यूशंस में आपको अपना अगर एक प्रोजेक्शन ऐसा रखना है कि नहीं, हम लोग एडमिट ही नहीं करते कि स्टेट का कोई फेलियर था किसी को ये को करने में, अगर इतना आप उस लेवल पे हैं, तो आप अपने कंपल्शंस को असाइड रखिए। जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, उसके लिए आप अलग से कमीशन आई वुड से कमीशन अगेन इज अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम, लेट मी टेल यू दिस। ये जो इवन एनएचआरसी के जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑर्डर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग भी नहीं समझता है। तो लेट मी हैव अ वेरी कैंडिड डिस्कशन ऑन दिस। आई मीन, दिस इज नॉट समथिंग वेयर I mean, NHRC passes something order. I mean, you can't even say this was a genocide. You're writing this was something akin to genocide. So what does it mean? So yeah, exactly. I was just reminded of that because आप इतना गली ढूंढ रहे हो कि भाई यार हमको वो बात बोलनी नहीं पड़े जो अगर हम बोलेंगे तो मतलब ये वही बात होगी कि ये मर्डर नहीं, मतलब it was not a homicide, it was akin to homicide. What does akin to homicide even mean? Akin to murder, for example. या तो मर्डर है या तो नहीं है। एग्जैक्टली, या मर्डर है या नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या नहीं है, आप नहीं है। वही है ना। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है कि भाई उनको सबको खुश रखना है, उनको सबको बैलेंस बिठाना है। तो बैलेंस के चक्कर में प्रॉपर्टी सूट में भी वो अब जो जमीन है, वो जमीन जिसको देनी है वो तो दे दी, चलो ठीक है, बट उसके साथ साथ सामने वाले को हॉस्पिटल भी देना जरूरी है, उसको 5 एकड़ जमीन देनी भी जरूरी है। और there's a lot of brushing issues under the carpet. Exactly. हम अभी एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने देश के सबसे बड़े नेताओं से पार्लियामेंट के अंदर ये तो एक्नॉलेजमेंट सुनी है ना कि इतने हजार लोग पिछले 30 सालों में मार दिए गए, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हम अब बदलाव लेके आ रहे हैं, हम एक नया कश्मीर बना रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, मेरी समझ में उन्होंने हमारा जेनोसाइड भी उतने ही हजार लोगों के बीच में डाल के उसमें डाल, मतलब ये वैसी बात होगी कि हालात खराब थे तो सबके लिए थे, आपके लिए अलग से थोड़ी थे। अलग से नहीं थे, बस वही। तो जब मैंने आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी की भी बात की, जब मैंने वही आपको उस पे आप थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हम कल भी इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, बट इट विल बी ग्रेट बिकॉज
हर टर्मिनोलॉजी, हर नॉमेनक्लेचर का एक लीगल इंटरप्रिटेशन और एक लीगल सिग्निफिकेंस होता है। तो और हमारे देश में जो भी होगा इस संदर्भ में वो लॉ के हिसाब से ही होगा, कानून से बाहर तो कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं। तो लोगों को, हमको इस भ्रम से भी बाहर लेके आना है कि देखिए इस चीज के बाद मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं उदाहरण बहुत लोगों को देता हूं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। मेरे घर में चोरी होती है, मैं लोगों को कुछ इस तरीके से ये इसकी रूपरेखा बांधूंगा और उसके बाद आप लीगल पर्सपेक्टिव बताइए। मेरे घर में चोरी होती है, मैं थाने में जाता हूं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, फिर उसके बाद थाने से मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं, मैं न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा के भी मुझे कुछ नहीं मिलता, तो मैं देश के जितने बड़े से बड़े कोर्ट इज द अल्टीमेट होप इन दिस कंट्री, यू नो, उससे ऊपर तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हूं जहां से न्याय की अपेक्षा भी की जा सकती है। अब मेरे को कोई ये समझा दे कि अगर किसी समाज में चोरी करना क्राइम के ऊपर कानून ही ना हो, मतलब अगर किसी ने चोरी की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, उसको पनिश करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और ये भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आपके साथ दोबारा कोई चोरी नहीं करेगा, तो क्या वैसे समाज में मेरे को न्याय मिल सकता है जहां पर न्याय के फ्रेमवर्क में ही चोरी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है? नहीं मिल सकता। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई कितना भी अपने कंठ से चिल्ला चिल्ला कर बोले कि हम आपको न्याय देंगे, न्याय अंतोगत्वा आपको फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क और कानून के थ्रू ही मिलने वाला है, किसी के बोलने से नहीं मिलने वाला। तो जब तक हमारे देश में जेनोसाइड जैसे हीनियस क्राइम के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क ना हो, जहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा हो कि जेनोसाइड का हम ये मानते हैं यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के हिसाब से, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी में हमने ये पनिशमेंट उसकी बनाई है, ऐसे ऐसे हम इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे या जो भी है। जो मैंने आपके साथ एक शेयर भी किया है, पनून कश्मीर के माध्यम से कश्मीरी पंडित समाज ने ये भी एक काम किया, जबकि हमारी अपेक्षा ये थी कि शायद भारत के जो हमारे नेता है, हमारे इतने वर्षों के, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार कंसेक्यूटिव पिछले 35 सालों की सरकार में शायद किसी में ये सेंसिटिविटी आएगी और वो एक जस्टिस हमें देंगे और एक कानून बनाएंगे जिसके तहत हमें जस्टिस मिल सके, क्योंकि कोई भी कानून क्राइम के हिसाब से इवॉल्व होता है। एज द क्राइम इवॉल्व्स द लीगल आल्सो इवॉल्व्स। तो उसकी एब्सेंस में तो हमको न्याय मिल ही नहीं सकता। तो मैं इस पे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, तो अगर मैं दोबारा आपको ये कहूं कि आप उसमें थोड़ी सी हमको स्पष्टता दीजिए कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की इवन रिकमेंडेशन का क्या मतलब है इस सिचुएशन में जहां पर हमको न्याय देने के लिए ही कोई लीगल फ्रेमवर्क ना हो। सबसे पहली बात ये कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी बहुत क्लियर नहीं किया गया था जजमेंट में। जी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन को, जैसा आपने शुरू की बात कि भाई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन को इस तरीके से रखा गया है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो होना है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, जो उनके परपेट्रेटर थे किलिंग से, उनसे नहीं है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी का इन्होंने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है कि जो कश्मीरी, जो मिलिटेंट थॉट विचारधारा से आता है या जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से आता है, उसका इंडियन स्टेट के साथ क्या है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो यही मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, तो सबसे पहली दिक्कत यहीं पे है, फंडामेंटल इशू। जो इंटरप्रिट, सब कुछ बहुत ही ऑर्नामेंटल, सब कुछ बहुत ही, मतलब आप ले जाओ इंटरप्रिटेशन, आपको क्या, सब कुछ बहुत कॉस्मेटिक है। तो सब कुछ इतना कॉस्ट, आई टेल यू, आई गो अप टू द एक्सटेंट, आज जो ये आपका स्टेट इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, जो एनआईए की जो स्टेट बॉडी होती है, जी, मैं उसी पे इसके बाद आने वाला था, क्योंकि मैं इसका एक कंजंक्शन दे ही देता हूं ताकि आप विस्तार से हमें ये समझाएं, और हमारा कश्मीरी पंडित समाज भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहा होगा उनको भी और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एक होप जागती है एक विक्टिम के मन में जब एक मीडिया फ्लैश होता है और बोलता है कि कश्मीरी पंडित जेनोसाइड के लिए हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये एसआईए खोला गया है, ये प्रोमिनेंट एफआईआर जो है ये इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एक एक ये बहुत घातक बात है कि आप एक फॉल्स होप दे रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज जिस क्राइम को एड्रेस करने के लिए कानून ही नहीं है, जैसे हमने अभी कहा, उसको आप जस्टिस कैसे देंगे? तो ये जो एसआईए वैसाए का जो ये गठन किया जाता है, क्या आप हमको लीगल
पर्सपेक्टिव में समझाएंगे कश्मीरी पंडित समाज को, Yes, yes, खासकर yes, 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 कि yes, yes. इन सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे संदर्भ में, हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें कितनी अपेक्षा रखनी चाहिए ऐसे स्टेप से? सी द थिंग इज, सबसे पहले तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रूट्स इन कश्मीर की जो पिटिशन थी उसमें ऑलरेडी ये है कि अब कोई किसी तरीके का जो ट्रायल या जो आपका एविडेंस है हम लोग एंटरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। 2017 में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऑलरेडी अंडर द कार्पेट जो है वो कर दिया था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम लोग एंटरटेन नहीं कर सकते। अब एसआईए का जो गठन का एक बात है, ये चुनाव से आप ठीक 6 महीने 8 महीने पहले इस तरीके की जो है होम मिनिस्ट्री का आप वो देखेंगे, विच इज़ फाइन, ठीक है, उसका एक अपना एक अलग सिग्निफिकेंस भी है। ऐसा नहीं कि इट इज़ एब्सोल्युटली सिंबॉलिक, बट एट द सेम टाइम जब आपके पास में, जैसा आपने खुद कहा कि भाई जेनोसाइड का कानून ही आपके पास नहीं है, आप क्या ऑफेंस में उसको आप उसको किस ऑफेंस में आप ट्राई करेंगे? आप ऑफेंस, या सबसे पहली बात तो जो अक्यूज है जावेद नल का, इज ही अलाइव और नॉट अलाइव, यू डोंट नो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट अबाउट द को अक्यूज ने ओवर द इयर्स जो है 5 साल जो भी काउंटर टेररिज्म काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस हुए उसके बाद बहुत से जो अक्यूज हैं वो तो इंडियन स्टेट की तरफ आ गए थे। तो क्या आपने किसी तरीके की उनको इम्यूनिटी दी? क्या आपने उनको किसी तरीके का कुछ वो दिया कि भाई आपने उनके इतने साल तक आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया उनको? फॉर एग्जांपल यासीन मलिक का केस, तो टेरर फाइनेंसिंग के केस में उनको एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, एनआईए ने पुश किया था कि उनको जो है ही शुड बी हैंग। तो वो उस केस के अंदर भी जो है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट जब पावर में थी उन्होंने उसको प्रोसिक्यूशन को पुश नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ पे एनआईए का जो केस है, अब एसआईए का जो केस जिसकी हम बात कर रहे थे, इस तरीके के होप्स में आप ट्राई करोगे उसको मर्डर के केस में, आप ट्राई करोगे होमिसाइड के केस में, कल्पेबल होमिसाइड के केस में, was it sufficient? Is the law which was the prevailing law at that point of time, क्या वो sufficient था इस तरीके के उसको डील करने के लिए? क्रिमिनल सिस्टम के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि जब कोई इवेंट हुआ उसके बाद में किसी ने कुछ मतलब इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कुछ मर्डर किया, तो उसको लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। यहाँ पे आप भी ये समझा सकते हैं थोड़ा सरल भाषा में? ऑफ कोर्स मैं समझाता हूँ। जैसे आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई क्राइम जब होता है, लॉ उस क्राइम के बाद उसके हिसाब से ही उसके एक्ट करेगा, वो पीछे जाके एक्ट नहीं करेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वेयर लेट्स से जैसे 1945 का टोक्यो ट्रायल है, किसी को ये सब समझना हो तो 1945 में जब एलाइज जीते और एक्सेस पावर हारी, तो एलाइज ने अपना ही ट्रिब्यूनल थोप दिया उन कंट्रीज के ऊपर और अपना ही लॉ अपने हिसाब से एनेक्ट किया, जिससे क्या है कि जापान के अंदर जाके जापान के प्राइम मिनिस्टर को अपने लॉ के हिसाब से प्रोसिक्यूट करके उसको कन्विक्ट किया और उसको सजाए फांसी दी उसको। तो एक बहुत जबरदस्त डिसेंट हुआ था वहाँ पे। जस्टिस राधा विनोद पॉल एक बहुत फेमस इंडियन जज थे जो वहाँ पे टोक्यो ट्रायल में गए थे, तो उनका एक बहुत अच्छा डिसेंट था। तो उन्होंने ये बात कही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपोज फैक्टो कि वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 के बाद, आपने ट्रायल कमेंस किया है उसके बाद में, तो आप जो है अब पीछे जाके आप जो है उनको प्रिवेलिंग लॉस के हिसाब से आप सजा नहीं दे सकते। अब आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक नया लॉ, नई कमेटी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। आप ये सब इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप वॉर जीत गए। अगर एक्सेस पावर वॉर जीतती तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करती। तो दैट इज गोज वेरी मच अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। सिमिलरली जो हमारा जो बार बार ये हम लोग देख रहे हैं कि भाई बार बार जो आईपीसी के थ्रू या जो भारतीय न्याय संहिता भी अब नया कानून आया, बिकॉज दैट आल्सो डजंट कवर द एस्पेक्ट ऑफ जेनोसाइड। आप इन लॉज के भरोसे इस सिवियर ऑफेंसेस में इन लोगों के ट्रायल नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑलरेडी जो है ये इश्यूज में बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे सब कुछ डिस्टॉर्ट हो चुका है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की कि वो ये एविडेंसेस लेके आए, बजाय कि वो इम्पोज करे कि भाई ओनर्स जो है प्रूव करने विक्टिम के ऊपर, विक्टिम के ऊपर। ये अगेन एक बहुत बड़ी फैलेसी है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तीसरी चीज, जैसा मैंने आपको कहा कि जिनको लेके डेटरेंस होनी चाहिए उनको लेके अप्रोच रेफॉर्मेटिव की है। भाई हुआ क्या 90s में, आपको यासीन मलिक को उस वक्त कन्विक्ट करना था या आपको बिट्टा कराटे को उस वक्त कन्विक्ट करना था, जिसने ओपन टीवी पे बोला है मैंने 23 कश्मीरी पंडितों को मारा है। आप उन लोगों को लग गए रिफॉर्म करने में कि ये तो क्या है कि जी वो उस टाइम पे
भटक गए थे और बिगड़े हुए, वो भटके हुए युवा। ये युवा थे उस वक्त पे। और आपने 1994 फिर वो, अब जाहिर सी बात है, एक सबसे बड़ा हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जिसको जब लॉ के ट्रिगरिंग उस पे आता है कि भाई अब लॉ की वजह से उसको क्या मार पड़ने वाली है, या लॉ बेसिकली व्हेन ही फेसेस द रैथ ऑफ द लॉ, वो गांधी जी की शरण में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक ये भी है हमारे कंट्री के अंदर। तो है खैर, हम लोग वकील जो हमारे जैसे लोग हैं वो ये सब चीजें सिखाते हैं इन अभियुक्तों को। बट द पॉइंट इज के देन यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी कि ये तो जब जी वहाँ यासीन मलिक वहाँ पे गए थे तिहाड़ जेल में, फिर वहाँ उन्होंने गांधी के बारे में पढ़ा। तो गांधी जी की किताब पढ़ते ही, अब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बेसिकली एक तरीके का वॉशिंग मशीन है, जिसको पढ़ते ही फिर वो उनके जो पिछले जो गुनाह हैं वो सारे के सारे क्या है कि वो साफ हो जाते हैं। जी, डुबकी लगा ली उन्होंने। वो डुबकी लगा दी उन्होंने। तो वैसे खैर डुबकियां आजकल ये दिस इज द प्रोसेस। तो वो डुबकी लगा ली, उससे वो पिछला जो जो उनका ये साफ, वो सब साफ ये हो गया। ये मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको, डू यू थिंक, बिकॉज दिस इज व्हाट द सेंस दैट आई एम गेटिंग, डू यू थिंक कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक ऐसी स्टेट अचीव की जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट अचीव किया जाए जिसमें पर्परट्रेटर रहे ही नहीं, क्योंकि उसकी इमेज क्लीन हो चुकी है। एग्जैक्टली यही तो हो रहा तो है। आप जो कह रहे हैं जी, वही बात हो रही है कि भाई परपेट्रेटर को आप परपरेटर अलग सुधर लेंस। चुका है। परपरेटर बेसिकली सुधर चुका है, ऐसी इमेज क्रिएट कर दो और कश्मीर में सब लोग एकदम सही हो गए हैं। सब सही है। एवरीवन इज अ नेशनलिस्ट, एवरीवन, कोई वहां से सब बाहर से ही आ रहे हैं जो गलत लोग हैं, और वहां पर सब कुछ एकदम सही है। बिकॉज देन व्हेन देयर इज नो परपरेटर ग्रुप, हु आर यू गोइंग टू पनिश? फिर तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते रहो कि हाँ हुआ था पास्ट में जेनोसाइड, तो हम अपनी सहानुभूति आपको दे देते हैं, जो सहानुभूति हर बिल्कुल। कश्मीरी पंडित या कश्मीर में कोई हिंदू मारा जाता है तो वो सहानुभूति ही मिलती है। जी। तो 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 वही तो वही राइट, मतलब हर 5-5 10-10 साल में से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के नैरेटिव आते रहते हैं, जिसमें ये कहा जाता और है भी कि है, भाई रेस्टोरेटिव जस्टिस की कुछ लोग बात करते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस, कि बात कर लो रेफॉर्मेटिव, आप। आप बात एब्सोल्युटली। कीजिए, आप वो Do you कीजिए। frankly, because you come from the legal background also, so do you really feel that in such cases is reconciliation and restorative justice really possible, or is there complete impossibility of these things when such heinous crimes have occurred? आई मीन दिस इज एन एस्केप, आई वुड से। आई मीन एक अच्छा एक पतली गली मिल जाती है एक परपेट्रेटर को निकलने के लिए। मतलब उसको ये है कि भाई अल्टीमेटली कि भाई मैं तो जी उस टाइम का एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही ऐसा था जिसमें क्या है कि मैंने ये सब काम कर दिया। अब द रीजन इज, जैसा मैंने आपको कहा, हर चीज का जो जड़ है ना सर नितिन, मैंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा, पढ़ा, बहुत कुछ, इसको बहुत लोगों से बात की। जी, द प्रॉब्लम इज द फैलेसी विद द स्टेट और इन द इंस्टीट्यूशंस। उनका नजरिया ही नहीं है उस चीज को समझने का या उसको एक्नॉलेज करने का, और वो ना चाहते हैं उस चीज में। अगर आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो 1991 23 नवंबर को जो वहाँ पे आपका कश्मीर में पुनः पोषपुरा हुआ, वो भी आपको एडमिट करना पड़ेगा। फिर आपको मेघालय में जो हुआ वो भी एडमिट करना पड़ेगा। फिर आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90s में हुआ वो भी एडमिट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट उस चीज को एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहता इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल स्फेयर में, कि भाई हमारी कंट्री में ऐसा कुछ कभी हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनके पार्ट पे फेलियर दिखाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब वो उनके पार्ट पे फेलियर दिखाता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो जब ईस्ट घूम घाम के लेफ्ट से सेंटर में आएगी या वेस्ट या राइट से सेंटर में आएगी, अल्टीमेटली वो पोजीशन यही लेगी। तो ये एक बहुत इस बात का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? ये जो बात है कि अगर हमने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये हुआ था हमारे देश में, हाँ तो इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाएगी। ठीक बिल्कुल। है, लेकिन हाँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से या किसी भी लिहाज से मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से व्हाट थ्रेट डज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दिस पर्सपेक्टिव थ्रो इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द फर्स्ट ऑफ not ऑल recognizing because of succumbing to international pressure? exactly. If that is actually the case, what threat does it impose? The threat is, first of all, you get bulldozed by the narrative presented by the your opposite country, your neighborhood country. They, no matter how much you criticize them, but in geostrategic issues में, इस lobbying issues में, ये लोग हमसे बहुत आगे हैं। Then I have to
tell you this. I'm telling you this with a lot of Really? research and a lot of authority. Of course, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप यूएनएचसीआर में जाएंगे या आप किसी भी यूएन बॉडी में जाएंगे, जब आप इन इश्यूज की बात करते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किलिंग ऑफ ओनली कश्मीरी पंडित, बिकॉज इंटरनेशनली इशू इज नॉट ओनली अबाउट किलिंग ऑफ पंडित्स. वो तो हम No, no. कम्युनिटी कह रही है. एक्नॉलेजमेंट आखिर में अल्टीमेटली उनकी किलिंग का है. आप 2008 में जब आपका इंटरलोक्यूटर कमेटी 2010 में फॉर्म हुई थी, जब होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, और ये आपके कई लोगों को उन्होंने ऐसे भेजा था वहाँ पे ग्राउंड पे रिसर्च करने के लिए, इंक्लूडिंग दिलीप पेडगांवकर, हु वाज द एडिटर ऑफ आपका टाइम्स ऑफ इंडिया. So Right. so there was an acknowledgement by Chidambaram at that point of time by the then government, and where they said कि ultimately जो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है वो तो कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हुआ है. तो उनका नैरेटिव जो है echoes with the narrative by the neighborhood country. तो तो अब जो ये गवर्नमेंट आई है, ये डिस्पेंसेशन आया है, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनली तो नहीं, बट मीडिया में या नैरेटिव चल रहा है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में. इंस्टीट्यूशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुई. और आज भी पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा हाप करता है उस इशू को, स्पेशली जो ये रेफ्यूजी या जो बेसिकली जेनोसाइड इशूज़ या रेफ्यूजी इशूज़ पे जब भी बात होती है वहाँ पे, तो वहाँ जब बात होती है ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ पे जब बात होती है, यूएन के लेट मी पुट इट इन अ मोर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, हम लोग नैरेटिव में अभी भी उनसे पीछे हैं. ये हमको एडमिट करना पड़ेगा अंतिम में. कहीं ना कहीं दिक्कत. हाँ, ऑब्वियसली नाउ यू हैव अ वाइब्रेंट गवर्नमेंट, you have a vibrant external affairs minister who calls spade a spade and all those things. That is a separate thing. But कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं विक्टिमाइजेशन के गेम में, क्योंकि किया जिंदगी भर ये इनका आइडियोलॉजी डेवलपमेंट का थोड़ी, इनका आइडियोलॉजी या तो मारना है या विक्टिम खेलना है. ये दो ही चीजें इनको समझ में आती है. तो जब आप विक्टिमाइजेशन के माइंडसेट से आप जो है आप अभी भी उस गेम में विक्टिम, अपने आप को विक्टिम शोकेस करने में, उस गेम में ये लोग बहुत आगे हैं. हम लोग वो चीज कर नहीं पाते बिकॉज वो नेचुरली हमें आती नहीं है. और वो उस do you think in this case the challenge is because India is demographically a Hindu majority country? Yes. So do you think I'm just curious to know, do you think that if the victimhood of Kashmiri Pandits, which is a reality, we are victims and survivors of a genocide, do you think that challenge also occurs because India is by and large a Hindu majority country? Yes. So it might not be a very strong point for India to play out the Kashmiri Pandit genocide victimhood narrative outside of India. Do you think that could be a factor? That is the reason. Yes, that is also one of the reasons. Okay. You have also tried your best with whatever legal remedies we have in the country to get some sense of justice for Kashmiri Pandits. It would be great अगर आप हमारे बीच कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स या जो आपने लीगल रेमेडीज भी ट्राई की हैं कि कश्मीरी पंडित समाज को किसी भी तरह का सेंस मिले न्याय होने का, उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो हम इस बात को फिर आगे लेकर जो जेनोसाइड बिल पनून कश्मीर ने प्रपोज किया है उस तक आएंगे, उस पर बात करते करते. सो इफ यू कुड टेल अस अबाउट योर, आपका निजी जो एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या कोशिशें की है लीगल तरीके से और उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कम्युनिटी की जब मैं बात करता हूँ, मैं आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या आई वोंट से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बट जो एक रिक्लेम करने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम में बात करता हूँ. एंड आई ऑल्सो डोंट, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, तो मैं डायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एसोसिएट नहीं करता. जी जी. हाँ, बिकॉज आई एम द फ्रेंड एंड द वेल विशर ऑफ द कम्युनिटी. सो हाँ, so when I talk about it, the thing is, there's a lot of great intellectual sense within the community. मतलब you have to realize that. मतलब आप ऐसा जो चीज़ों पे पकड़, जो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी की लोगों की है इंडिविजुअली, when I talk about, is amazing. मतलब it is something I think historically I think only Jews are the ones जिनको हम उस एबिलिटी का मान सकते हैं, बिकॉज जो चीज़ें इन लोगों ने कॉन्कर की हैं हिस्टोरिकली, इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी इंडियन गवर्नमेंट में, जो अगेन जो डीप स्टेट है, स्टेट का रुख क्या होना चाहिए, बेसिकली दे आर द नेशन बिल्डर्स, आई वुड से. व्हेन आई टॉक टू देम, आई सी एक अप्रोच जो है वो
कहीं ना कहीं इंडिविजुअली जब आप मिलते हो तो आप समझते हो कि नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस, बट व्हेन वी सी दैट, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। हाँ, कोई ना कोई क्राइसिस होगा तो ऑब्वियसली दे कम टुगेदर एंड एवरीथिंग इज देयर, बट आई स्टिल बिलीव दैट देयर हैज टू बी अ सॉलिड फोर्स दैट हैज टू गो इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. That has been my experience, one first thing. Second thing is, I have interacted with a lot of groups independently, and when I talk to them, somewhere this fight for justice, this whole thing कि भाई हमको justice strive करना है, वो एक feeling, वो एक sentiment community में at large है. You have to give it, you have to give it to them, because जैसा कि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, वो होता क्या था कि 1947 के बाद, जो पार्टीशन के बाद जो हिंदू कम्युनिटी इंडिया में आई थी, स्पेशली पंजाब और सिंध से, आपने देखा होगा कि जो इनिशियल नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते थे की पोजीशंस पे, जानबूझ के उन लोगों का किया जाता था जो लोग वहाँ से आए थे, और क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिजेंटमेंट था उस चीज़ को रिक्लेम करने का, या उस चीज़, जिन लोगों की वजह से उनको वहाँ से आना पड़ा, उनके उनसे लोहा लेने का, वो उन्हीं लोगों में था. तो कहीं ना, तो सेम थिंग इज के अल्टीमेटली ये एक लास्ट जनरेशन है जो इस चीज़ को लेके बैटल कर सकती है. एंड कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस क्योंकि उन लोगों में है, बिकॉज द पीपल हु लेफ्ट देयर हाउसेज द एज ऑफ 18-20, नाउ दे आर इन द मिड 50s. नाउ एक तरीके से वो अपना जो सोशल जो है, अपना जो जो भी उनका सोशल रिक्वायरमेंट है लाइफ में, जो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, उससे वो आगे आ चुके हैं. तो अब वो कहीं ना कहीं देना चाहते हैं अपनी यंग कम्युनिटी को कि भाई हम जो चीज़ हमको छोड़नी पड़ी अब कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वहाँ से, वो हम अपनी अपनी जो पूंजी है या जो अपनी ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं अपनी आने वाली जनरेशन को वापस दे सकें. तो ये एक थॉट, एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग है. और इस गवर्नमेंट के, ठीक है, अपने कुछ क्रिटिसिज्म है, इश्यूज हैं जो कि हमने जिस पे भी बात की, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये हमारा बेस्ट एक मौका है जिसमें हम ये सब चीज़ अचीव कर सकते हैं. सो इन दैट दिस थिंग दे वांट टू अचीव इट, दे वांट टू डू इट. हाउएवर, जैसा कि लेजिस्लेशन को लेके हमने बात की नितिन जी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये बात अब समझनी पड़ेगी कि जो जेनोसाइड का बिल है या जेनोसाइड का लेजिस्लेशन है, वो इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर. ये कहीं ना कहीं सरकार को इसको अब नॉट एज अ प्राइवेट मेंबर बिल या ऐसा कुछ, एक ऑफिशियल पोजीशन लेते हुए इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा. एंड मैंने नितिन जी आपका बिल पढ़ा, बिल जो है इज एब्सोल्युटली इन सिंक विद इंडियाज ऑब्लिगेशन टू द जेनोसाइड कन्वेंशन. एंड जो पन्नू कश्मीर ने सरकार के सामने ऑलरेडी रखा है, मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि सरकार के जितने भी अप्रोप्रिएट जगह जहां पर ये बिल पहुंचनी चाहिए, मेरी नॉलेज में ये है कि हर जगह पर ये पहुंचाया गया, और उसके साथ साथ सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को भी ये भेजा गया है 2020 में. 2020 का ये बनाया हुआ बिल है, और उसी समय ये सरकार के सामने और सभी मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने भी ये प्रपोज किया गया है. अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बिल को पढ़कर आपकी क्या ओपिनियंस हैं, एंड व्हाट, आई मीन, आई नो दैट इट्स एन इम्पेरेटिव दैट देयर शुड बी अ लॉ, और ये जो बिल है ये एक रेफरेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक लॉ बनाने के लिए, जिससे कश्मीरी पंडित समाज को भी न्याय मिल पाए. और ब्रॉडर आइडिया इज कि भारत में किसी के साथ भी ऐसा क्राइम कभी भी कमिट ना हो, कभी भी कमिट ना हो. मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस बिल के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, और ये बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए कितनी ज्यादा है, कश्मीरी पंडित समाज के लिए कितनी ज्यादा है, और अगर ये बिल सरकार लेके आती है और इसे पारित करती है, तो कश्मीरी पंडित समाज के लिए ये कितना फायदेमंद होगा, और उससे क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी कश्मीरी पंडित समाज. मैं एक बात कहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने जो है, चाहे जुडिशरी हुई, चाहे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हुई, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को निराश किया है. अब आई थिंक इस पे तो एक बात आम सहमति है, और इस पे तो अब जो जस्टिस संजय किशन कौल, जो जिन्होंने ट्रूथ एंड कंसिलिएशन कमेटी के बारे में जिक्र किया था आपने 370 की जजमेंट में, उन्होंने भी इस बात को माना आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ कोर्स, कि भाई जो है कहीं ना कहीं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. Judiciary also with time and again they have failed, because the due process of law has never been followed when it comes about. I think the greatest example to prove this also and to establish what you just said is कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है
कि भारत में आज तक पिछले 35 सालों में कश्मीरी पंडित जेनोसाइड या कश्मीरी पंडित को मारे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट तक नहीं किया गया है। Correct. देयर इज जीरो कन्विक्शन। Conviction, yes, yes. एक भी इंसान आज की तारीख में, आज की तिथि में जेल में एक कश्मीरी पंडित को मारने के लिए नहीं गया है, उसको सजा सुनाई भी नहीं गई है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो एस्टैब्लिश करता है कि हाउ द सिस्टम इन दिस कंट्री, द इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड in every possible way to even give the sense of or even the hope for a probable justice. Yeah, that's the thing. I mean, no institution has ever bite the bullet. They have never been able to, serve the justice in a way in which they were supposed to. And कहीं ना कहीं they have always looked for the deviations. मतलब कहीं ना कहीं एक लीपापोती हुई है इस पूरे जुडिशियल सिस्टम में कि भाई हमको अल्टीमेटली जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बेसिकली अक्यूज है, जिसको लेके डेटर करना है आपको कि भाई वो दोबारा ये चीज़ नहीं हो, एक एग्जांपल सेट करना है आपको, तो आप उस चीज़ को क्या है कि आप उसको एक तरीके का रेफॉर्मेटिव आपने अप्रोच दे दिया। और तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आई वुड सजेस्ट कि भाई इन अ वे ये बिल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। ये बिल एक अपने आप एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और मुझे लगता है कि ये अगर बिल जिस दिन ये टेबल होके ये पास हुआ और ये एक्ट बनता है, ये सबसे बड़ा कोर्स करेक्शन होगा इंडियन पार्लियामेंट का, इंडियन स्टेट का, जो उनका अब तक का अप्रोच रहा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए। सो दैट इज समथिंग विच स्टेट शुड डू। स्टेट शुड कोर्स करेक्ट देयर दिस थिंग, देयर अप्रोच। मतलब वही जैसा मैंने कहा कि कम्युनिटी इज नॉट जस्ट देयर फॉर व्हाट अबाउट डिबेट ऑन अ टेलीविजन चैनल, जहाँ पे बस आपको किसी एक और जो कुछ इशू हुआ है उसको आपको काउंटर करने के लिए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बीच में आना पड़ रहा है। सारा कुछ हो नहीं रहा है फ्रैंकली। वो उस चीज को आगे ले जाके अगर आपको जस्टिस सर्व करना है, सो दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन accept the fact that yes, we failed to acknowledge with what happened with the community, and legally and constitutionally within the realms of the constitution we want to give them justice, because this is not something which is, I mean, only we are doing it because we are bound by genocide convention or whatever. India convention वगैरह तो चलो एक चीज है, हमारा जो लीगल सिस्टम है इतने सालों का पुराना है, और उस उतने पुराने एक साउंड जुडिशियल सिस्टम में आप इस तरीके से जो है डेविएशंस, लीपापोती, या जैसे कहते हैं एक तरीके का अपीजमेंट, मतलब जुडिशियल अपीजमेंट हुआ बेसिकली। अगर आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को जस्टिस नहीं दे रहे हो तो बेसिकली आप जुडिशियली अपीज कर रहे हो उनके परपेट्रेटर्स को। द टर्म हियर इज द जुडिशियल अपीजमेंट दैट हैज हैपेंड इन ऑर्डर कि भाई उनको नहीं करके, एंड बार बार जब ये इशू आता है तो आप एक ही नैरेटिव लेके आते हो कि देयर इज अदर कम्युनिटी at large which has suffered more than the Kashmiri Pandit community. Yeah. So that itself shows कि fundamentally कितने misinformation है top level पे, या misinformation नहीं कहूँगा मैं, तो in fact वही कहूँगा कि शत्रुमूर्ख syndrome है ये, it's an ostrich syndrome where deliberately they have chosen to close their eyes on a particular incident. Right. Now coming and rhetorics apart, because obviously whenever we talk about in this issue we talk about with a lot of emotion. So apart, all I'm trying to say is in the judicial mechanism, the parliament first has to correct their this thing, the fallacies that have gone in adopting the laws. First of all, second thing is, irrespective of the convention, the approach should be to enact this bill, the genocide bill. Panun Kashmir's genocide bill, of course. Panun Kashmir's genocide bill has to be has to be tabled, has to be passed by both the houses. You have such a strong majority in both the houses, and I understand why Panun Kashmir, because Panun Kashmir always also feels that this is their best chance. Today, this government is there. This is their only hope, which can do this. Absolutely, we are absolutely hopeful. Everything said, I personally also don't see hope from any other political dispensation. So the present political dispensation also has to understand. I think it's also a huge opportunity for the current dispensation to recognize it, to address it head on, to call a spade, and to enact this law.
right. Exactly, And if you exactly. could, touch upon this fact कि अगर FIRs जो कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स के लिए हुए हैं और जो भी क्राइम्स कमिट हुए हैं, अ, उन FIRs को अगर इंडिविजुअलिस्टिकली देखा जाए, तो Yes, क्या कभी भी न्याय पूरे समाज को मिल सकता है? मैं वापस आना चाहूंगा ये जो एसआई की हमने बात की थी, एंड आई अगेन रिपीट, with all due respect to the institutions, there's absolutely no doubt on the incredible job they are institution, doing. right? Because it's because of the institutions that we have hope, and we feel that we will get justice. Without institutions तो कुछ हो ही नहीं सकता एक डेमोक्रेसी में. लेकिन मेरा क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म ये है कि, और मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं इस बात पे, Mhm. कि जो हम बार बार ये न्यूज फ्लैशेस या नैरेटिव में आते हुए देखते हैं कि ये इंटेंट पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी पंडित समाज के साथ हम न्याय कर रहे हैं, बट डू यू थिंक दिस मैकेनिज्म इज गोइंग टू गिव दैट जस्टिस? इन्वेस्टिगेटिंग FIRs individually, considering these killings as multiple homicides, if I were to put it that way, अलग अलग मल्टीपल होमिसाइड्स की तरह क्या एक कश्मीरी पंडित समाज को न्याय दिया जा सकता है? एब्सोल्युटली नितिन, आपने जो बात की वो एकदम सही बात है। आई मीन ऑब्वियसली अब आप सब, आपको जो किलिंग्स हुई हैं उसको आपको कलेक्टिव उसमें ही देखना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअल ट्रायल्स इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, स्पेशली आफ्टर 34 years। कौन सा एविडेंस गैदर करना, क्या करना, इतने तो फैक्शंस जो उसके बाद JKLF के टूट गए, कितने यहाँ आ गए, कितने वहाँ चले गए, मतलब इन सच कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल नैरेटिव। और 6-7 साल आपने वहाँ पे जो जो किया, किस किस को क्या इम्यूनिटी दी स्टेट ने, क्या क्या प्रोमिस किए कितने सारे मिलिटेंट्स के साथ में, क्या क्या डॉसियर में है होम मिनिस्ट्री के, हमें कुछ नहीं पता। अब बात आई कि भाई, रही बात अब जस्टिस की, तो दिस इज द ओनली वे, जैसा आपने कहा कि भाई आप इन सारे किलिंग्स को जो है कंबाइन करें, आप उसको कंबाइन करके एक प्रॉपर ट्रिब्यूनल फॉर्म में, जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे थे, जो जो फादिस। बिल का भी एक पार्ट है, एग्जैक्टली, ये फॉर्म एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ट्रिब्यूनल्स, एंड देयर आर ऑलरेडी हिस्टोरिकल यस, यस, रेफरेंसेस लाइक यस, न्यूरमबर्ग यस। ट्रायल्स एंड Colombo यू नो trial and Tokyo trial and many. हाँ, तो फार ईस्ट ट्रायल जो है, हाँ, तो द थिंग इज आपका इतना सारा जो है आपके पास में ये एक मौका है कि भाई आप एक फॉर्म करें, एक ट्रिब्यूनल सेटअप करें विद द एक्ट ऑफ अ स्टैट्यूटरी तरीके से। जब वो ट्रिब्यूनल फॉर्म होगा, तो जस्ट द वे आपका एक 1984 सिख जेनोसाइड कमीशन जैसा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, कमीशन, तो आई वोंट से इज अ वेरी फीजिबल स्टेप, बट एट द सेम टाइम आपको एक ट्रिब्यूनल फॉर्म में उसको आप करेंगे तो आप जस्टिस दे सकते हैं, बिकॉज बट देयर कल को हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, देयर even हैज if टू बी, there is a tribunal. एग्जैक्टली, There एग्जैक्टली, has to be, एग्जैक्टली। मतलब it cannot be like an announcement कि we have formed a tribunal and then the tribunal is on its own. There has to be a Yes, law, it has to be by, comprehensive special law, exactly, yeah, exactly, the bylaws that have will to be ensure formed. that the tribunal also has the Yes, yes, accountability and exactly, works within the framework of that exactly. particular special It law. it should be like a NIA code, basically. The NIA has a full-fledged code through Right. the NIA Act. Something on those lines. Obviously, you have given the constitution of the Framework. committee. The framework of it has to be formed. A Supreme Court judge, High Court judge, which I read about. Yeah. So, so if you have something of that sort, where a retired Supreme Court judge or a serving Supreme Court judge, who takes it up and who probes into what kind of killings have happened, how it has happened, how, and also very important, dwelling into the role of the state also, why state has failed to prosecute these perpetrators for the longest period of time. See, any tribunal, any commission, any judicial framework can never be a subservient to the government. You have to call out the hypocrisy of the state also if it is required to do so. Yeah, absolutely, absolutely. That's a very important thing in the because constitution. because it's truth in its own that the state apparatus at that time, it's not like the agencies has Exactly. absolutely no idea, so there was Exactly. complacency. Exactly. There was a complacency. There was a calculated negligence. There was a, like I said, I mean, the whole thing was to plant this narrative where
perpetrator is the victim, and the victim has been the longest, or the for the was the perpetrator for the longest time. तो ये सब narrative को उलझाना, complex करना, through left, through right, whatever. I mean, there's a lot of dirty game which has been played in J&K, and लोग मतलब समझ भी नहीं पाएंगे, उम्रें लग जाती है लोगों को जम्मू कश्मीर समझने में. तो जिसने जम्मू कश्मीर समझ लिया वो जिंदगी जी लिया एक तरीके से. What I'm trying to say is that the thing is that इतना कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क, इतना सब कुछ स्टेट में, आप अगर स्टेट ने भी कुछ गलत किया है, so you should say that yes, state also has to be prosecuted, the officials or whosoever. I mean, at that point of time, and when I talk about state, it's not only about the bureaucrats. I talk about a lot of politicians who were at the helm of affairs at that point of time, who were responsible for instigating the jihad against Kashmiri Pandit community, the Hindus in the state, the Kafirs. So ये सब चीजें भी आपको लेनी पड़ेंगी. बट वही प्रॉब्लम है ना कि आप मोमेंट आप उस चीज में जाना भी चाहेंगे तो आप इंटरनेशनली आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि अरे हम किसी मुस्लिम परपेट्रेटर को हम जो है कन्विक्ट कर रहे हैं तो देखिए हम लोग बहुत एंटी मुस्लिम नहीं प्रोजेक्ट हो जाएं. ये सब चीज़ें जो है ये अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों से बहुत आसानी से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये एक हार्ड रियलिटी है. जी 5 अगस्त 2019 एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन और मतलब हम मतलब देयर इज अ मेटाफर व्हिच सेज कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो हुआ वो सच में हुआ कि नहीं. तो उसके लिए वी हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल टू द करंट गवर्नमेंट. वी हैव ऑलवेज हैड ग्रैटिट्यूड बिकॉज you know we thought that it's going to take generations for those steps to be taken. And I think sometimes people also forget the role of Kashmiri Pandits, you know, who fought literally with all their life, blood, sweat, everything against 370, against 35A, for reorganization. You know, if you see Margdarshan Resolution 1991 of Pann Kashmir, 70% of that resolution approximately is what 5th of August actually was about, including making you know the state, reorganizing the state and making Ladakh the UT, which was part of many proceedings of the you know discussions that led to the Margdarshan resolution also. So I wanted to ask you from your personal experience, because you represented Kashmiri Pandits in this case of the hearing that was going on for 370 in the Supreme Court. And I wanted to know, now it's history. 370, 35A, all that is history. And Supreme Court has literally put the full stop on any question whatsoever on it. And you were fighting, you were basically, your position was for the stand of the government. Yes, sir. So it's we were supporting through behalf of yes. Right. So what I wanted to learn from you is, now that we have welcomed it, and genuinely so, and we have fought for it, and we have celebrated it, and also supported the government in the Supreme Court on their stand. Right. How do you see post 5th of August 2019 Kashmir, the narrative? We are very happy that there are many developmental projects and everything that's happening in Kashmir, but the overall narrative that Kashmir बदल रहा है और ये नया कश्मीर है, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि नया कश्मीर, वो कश्मीर कैसे हो सकता है जिसमें कश्मीरी पंडित ही नहीं है? वो नया कश्मीर कैसे हो सकता है? So I wanted your perspective, and this is going to be one of the last questions, but just maybe second last question. No, that's fine. Because you've been directly involved in this struggle, and you've if you want to talk about your experience with the Supreme Court hearings, you can mention that. And after that, if you could tell us post 5th of August 2019, how do you see Kashmir and the narrative that's being built? I'll be very candid with you on this. In fact, when we had filed this intervener application in the Supreme Court on behalf of Youth for Pann Kashmir, what I figured out was, so first of all, the judges were very clear that they do not want to directly entertain any of the petition which has to do anything with any community or any particular ethnic religious group. They were focusing more on
So the thing was that they first of all they denied the genocide thing कि ये तो चलो ये सब बात पे तो हमको बात ही नहीं करनी है और Because as 370 far से as my knowledge goes, your propositions mentioned the genocide of Kashmiri Pandits. exactly, yes, we did. Officially, we wanted that to be recorded. We are very glad that at least it was acknowledged in the final judgment. And it It was entered into the records. yes, yes, yes. It has gone into the and that is the reason why we did that exercise. We were also Right, we are aware that we're not going to get anything very path right, breaking from right, right, the institutions, but we wanted to be heard and we wanted to make some noise there. right. So now the thing was when we were going there to the court and we were listening to all the hearings, the judges were only focused on how 370 was subverted over the years, how 370 again became an issue, what were the constitutional reasons for which 370 370 was enacted in 1957. So they were dwelling more into the history, but they were not ready to listen to what the community, how community has been discriminated because of Article 370 over the years. Right. And that goes very much against the golden triangle of the Indian Constitution: Article 14, Article 19, Article 21. So 21. exactly. So this article, so this narrative, so judges were very. They had this very preconceived notion that the moment we have to entertain Kashmiri Pandit community, then the whole argument of the law would go on a different direction, and then we will be completely, we'll be going on a different tangent altogether. So they were giving an impression that you are more like a noisemakers in the court rather than actually fighting for the justice, because they actually went on this whole 2017 roots in Kashmir petition, where they said that you cannot do anything now. What has been done has been done. So that was the attitude basically, and they only allowed the interveners to argue for only 2 minutes, not even like 2 minutes, where we actually presented our petition, where we categorically made the statement. They took the statement, but in the judgment also they nowhere recorded the fact that yes, there is a community who has been targeted, who has faced the extermination by the hands of the majority, the minority at one point of time, but then becoming minority in their own home state, and unfortunately, and they are like they have to leave, they have to flee from their own place. So this acknowledgement which we sought, that was not granted by the honorable Supreme Court. Obviously, it doesn't end the battle there. So the whole approach, like I said, of the institution is not very pro Kashmiri Right. Pandit. The whole issue, and also there was no talk about the resettlement of Kashmiri Pandits. There was when you all I'm trying to do is I'm drawing a parallel with the Ayodhya judgment, where you can Right. go out of the way. Yeah, yeah, yeah. You can make Appease, observations, recommendations. Yeah. you made an observation to appease a particular community in a title suit, Yeah. which was only pertaining to the land. You went out of the way, you offered them the land, 5-acre land, so that there is a religious harmony in the country. You could have done the same thing here also. But the problem is that the judiciary in India is absolutely, doesn't acknowledge the fact that what has happened with the Kashmiri Pandit community. The state only believes in tokenization of the community, where they just give, some kind of a token before the elections. That is a big problem, and that approach needs to be changed. I think somewhere I think this consciousness is coming to the community, obviously, because like I said कि एक जनरेशन में आप जब सब कुछ अप्रूव हो जाता है, उसके बाद कम से कम 25 साल 30 साल आपको लगता है वापस सब चीज़ को खड़ा करने में, बनाने में, उसके बाद जब आप जस्टिस के लिए जा सकते हैं, बिकॉज लाइक हमने जैसा कहा कि विक्टिमाइजेशन में हम उन लोगों से कभी जीत नहीं पाएंगे. जितना विक्टिमाइजेशन, जिस लेवल का विक्टिमाइजेशन वो लोग खेलते हैं, बिकॉज वो लोग रिलीजन की आड़ में विक्टिमाइजेशन खेलेंगे. वो लोग आपका इंडियन स्टेट के अगेंस्ट के भाई, वो तो इंडियन स्टेट जो है बहुत ही ऑपरेसिव स्टेट है, वो विक्टिमाइजेशन खेलेंगे. हम वो They विक्टिमाइजेशन हम they play out the victimization card या to create hostility, to create a हॉस्टिलिटी, threat, to create एग्जैक्टली threat. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो मतलब वो वो ब्लैकमेल सिचुएशन क्रिएट करते हैं. स्टेट को ब्लैकमेल करने का जो आर्ट उन लोगों में है, वो हम लोगों में नहीं है. हम आज भी यही कहेंगे कि स्टेट जैसा भी हो, हमारा ही घर है यार. आखिर में मेरा घर कैसा भी होगा, चाहे गंदा होगा चाहे अच्छा होगा, चाहे उसमें सीमेंट बाहर निकल गया, मैं वो घर मेरा है.
हमारा हमारा बचपन से हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है, एक हिंदू थॉट प्रोसेस, वो इस तरीके का है। आई एम सॉरी, आई एम लिमिटिंग लिटिल बिट, नो नो नो, बट हाँ हाँ हाँ, बट अगले सामने वाली कम्युनिटी, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको 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 पता है कि भाई क्लैरिटी सब है। कुछ, हाँ क्लैरिटी है कि भाई मिल रहा है, आर्म्स मिल रहा है, लेते जाओ, आज ये खत्म हो गया, कल दूसरा होना रहेंगे। तो उनका क्लैरिटी उस चीज को लेके है, और हम वो चीज उस टुच्चेपन पे कभी आ नहीं सकते, दिक्कत हो गई। तो अब जब हम नहीं आ सकते, तो हम अपनी लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब हम दाल रोटी की लड़ाई से आगे निकलेंगे। ये फैक्ट है ना कि भाई आज आप जैसे नितिन, जैसा मैं आपको जानता हूँ, आई नो योर स्टोरी, आपकी आपने अपना बचपन जो है उन कैंप्स में निकाला है। तो आज आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक आप अपने पेरेंट्स को एक कंफर्ट, एक लेवल पे नहीं लेके आ पाओगे, या आप जो अपने माइंड में आपने एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है, यार मुझे ये अटेन अगेन करना अगेन पड़ेगा। आई मीन नो बायस, नॉट बिकॉज आई एम बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स माय हाँ ओन कम्युनिटी, बट मुझे लगता है कि जब हमारी कम्युनिटी के पास कुछ नहीं था, हाँ, फिर भी उस शॉक को मैनेज यस, करते हुए जो करना कॉम्प्रिहेंशन क्रिएट किया, जो करेक्ट। दिशा सिर्फ अपनी कौम को नहीं बट बल्कि पूरे राष्ट्र के सामने रखी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के रूप में, मुझे लगता है इट्स इनक्रेडिबल। आई एम नॉट इट्स सेइंग दिस इनक्रेडिबल। merely as a Kashmiri No, no, Pandit. no, I no, think no, it's no, no, incredible, the incredible. survivor instinct and the kind of comprehension that we've had, and we've also sort of given. मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी realizations और तथ्य हैं जो कश्मीरी पंडित समाज पिछले 35 साल से कह रहा है। सात और सौ साल से 700 साल से सात आप लोग सात सौ, जेनोसाइड बिल्कुल, के विक्टिम रहे हैं आप लोग। एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट कि पूरा देश हमारी आवाज को सुन नहीं रहा, और उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ कश्मीरी पंडित समाज नहीं भुगतेगा, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट नथिंग टू लूज, वी हैव राइट, लॉस्ट एवरीथिंग, वी राइट, हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, but succumbed in front of the perpetrator. We have never succumbed, राइट, राइट, and we just sacrificed everything. So we have whatever we have built right now is post all that sacrifice from scratch. राइट, But मुझे लगता है कि हमारी आवाज न सुनने का, अगेन आई एम डिविएटिंग, बट मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि हमारी बात न सुनने का जो खामियाजा है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो सिर्फ हम नहीं, वो पूरा देश देश भुगतना अनफॉर्चुनेटली है, भुगतेगा, बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज वो कॉम्प्रहेंशन क्या है ना, हर किसी को उनके साथ, खुद के साथ वैसा क्राइम हो उसका वेट नहीं करना चाहिए. नहीं करना So, चाहिए। so the greatest thing about Kashmiri Pandits telling their story, and it's incredible the way we have managed it, is so that it doesn't happen with someone else also. It should एग्जैक्टली, happen with nobody, एग्जैक्टली, right? Okay, I'll quickly come back before we wrap this session. I'll quickly come back to your take on post 370, the landmark historic decision that was taken on August 5, 2019. Post that, how do you see Kashmir and the narratives that have been built around Kashmir, and how do you think it impacts Kashmiri Pandits? सो नया कश्मीर की आपने जैसे बात की थी पिछले क्वेश्चन में, एक्चुअली मैं वो बात खत्म नहीं कर पाया था। सो जब नया कश्मीर की जब बात हुई होती है, तो नया कश्मीर में आप अभी भी जो जो डॉक्ट्रिन है हमारा स्टेट का, वो ये है कि आप जो परपेट्रेटर हैं उन्हीं को आप एम्पावर कीजिए, और जो मतलब बंदूक लेके खड़ा हुआ था जो आदमी, उसको आपने मिठाई खिलाई। अब वो मिठाई खा के आप ये रिफॉर्मिस्ट अप्रोच जिसकी आप बात कर रिफॉर्म, रहे हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप ये सोचेंगे कि भाई मैं उसको मिठाई खिला के जो है उससे बंदूक वो छोड़ देगा, वो मिठाई खा के वो हमारी तरफ आ जाएगा। ये अप्रोच कश्मीर में काम नहीं करता। ये बार बार पिछले 30 साल में स्टेट को ये बात अब समझ लेनी चाहिए, पहली बात। तो ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच से अब क्या है, आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर द इयर्स, सी दिस इज कश्मीरी, क्योंकि मैं काफ़ी कश्मीरी लोगों के बीच रहा हूँ, और मैं मुझे पता है कश्मीरी मुस्लिम्स भी कैसे सोचते हैं। द थिंग इज 10-12 साल अगर ये लोग आपके साथ आएंगे, मिलेंगे, ये आपको अपने जैसा बना देंगे, और ये बदलेंगे नहीं। तो होगा क्या कि 10 साल में, 15 साल में आपको ये लगेगा कि भाई ये लोग जिनको हमने आज स्टेट ने अपने पेरोल पे रखा हुआ है, या स्टेट ने जिसको एंगेज किया हुआ है अपनी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, आप मुगालते में जी रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके कभी हो सकता है, तो आप इनको मिठाई खिलाएंगे, तो मिठाई खा के, आप ये मत सोचिए मिठाई खा के मोटे भी हो जाएंगे और बंदूक भी अपने पास रखेंगे। तो ये खाए पिए बंदूकधारी हो जाएंगे। आप सोचे कि बंदूक छोड़ के इससे मिठाई खा के अच्छा आदमी बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये स्टेट अभी भी उस चीज को जो है वो बाहर नहीं आ रही, बिकॉज स्टेट का कैसा है
कि भाई आज स्टेट आज तक उसी चीज़ में बिलीव करता आ रहा है जैसा आज से 50-60 साल पहले सोचता था कि भाई आप इनको अपील करके रखो, आप इनको पैसा दोगे, जितना पैसा दोगे उतना ये आपके साथ होते जाएँगे। तो ये पैसा भी आपसे ले लेंगे, ये जिहाद भी नहीं छोड़ेंगे और आप एक तरीके से पैसा दे के आप इन्हीं की जेबें भर रहे हो। एजेंसीज़ जितने आप कश्मीर तो आप नितिन मुझसे ज़्यादा समझते हैं, हर हर ऑर्गेनाइज़ेशन का, हर पैरामिलिट्री फ़ोर्स हुई या अपना होम मिनिस्ट्री के ट्रूपर्स हुए, सबका अपनी-अपनी दादागिरी अपने-अपने इलाकों में है वहाँ पे। हर आदमी मल्टीपल सोर्सेज़ से वो पैसा उसको मिलता है। वो कोई किसी का मुखबिर होता है, कुछ क्या होता है। तो ग्राउंड रियलिटी साउथ कश्मीर स्पेशली यू नो नथिंग हाउ इट इज़। आई मीन and you are empowering those people and they are making them more strong and tomorrow again they will come against you, they will fight against you and they will do the same thing what they did in 1990, what Burhan Wani did, what all the Hizbul people have been doing over the years. आखिर में आपने सैयद सलाउद्दीन के बेटे को भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया, आपने यासीन मलिक को पीएमओ में बुलाया, आपने सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन जो है उनके माइंड में वैसी की वैसी ही है और वो आपको लोग ऐसा क्यों, मतलब if I just Yeah, play of course. devil's advocate, Yeah, of course, why of course. why are you so pessimistic with the majority community in Kashmir? आप देखिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहे हैं, नौकरियों से लोगों को निकाल रहे हैं, आपको फिर भी लगता है कि कश्मीर में कुछ बदलेगा नहीं ये सब करके? इतना इजी नहीं है नितिन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस रिजीम को और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि आप बेस्ट ऑप्शन आपको सारे गिवन सिनेरियो में ये रिजीम है जो कुछ कर सकती है। ये रिजीम है जो वहाँ पे जमात की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर सकती है। आप जो कांस्टेंट एक जो इतने साल से जो ये एयर फाइनेंसिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर सकती है। चीज़ें हो रही है नितिन, बट जितना तेज़ी से चीज़ें हो रही है उतना ही आपको तेज़ी से बैकलैश भी जो है वो आने वाले टाइम में मिलेगा। बट आप आपको लगता है अगर चीजें तेजी से भी हो रही है तो सही कॉम्प्रहेंशन और पर्सपेक्टिव में हो रही है? नहीं, कुछ ना कुछ तो क्योंकि अगर हम ये मान लें कि चलिए अगले 20 साल में कश्मीर को कंप्लीटली डीरेडिकलाइज कर दे, लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक, हाइपोथेटिकली अगले 20 साल में, मतलब मैंने तो 20 साल बहुत ही कम टाइम वैसा, मतलब हम अभी 700 साल गिनवा रहे थे तो 20 साल तो खैर क्या क्या चाहिए 20, इसमें? जी, मतलब वो जैसे है ना इसका रेशियो की इस बात का कि 70 साल से या 60 साल से पिछली सरकारों ने ये किया तो हम 15 ही साल में कैसे सही कर दें? तो नहीं वो 700 साल से जो चल रहा है वो, वो बट वो फिर भी वो हाइपोथेटिकली 20 साल में अगर मान ले कश्मीर कंप्लीटली डीरेडिकलाइज हो जाता है, करेक्ट। does that mean that justice has been served to Kashmiri Pandits? Politically, yes, but hypothetically, again, I'm also giving an answer on a hypothetical basis. तो पॉलिटिकली तो जस्टिस जो है आपको जस्टिस मिल गया, बट वो जस्टिस एक विजिलेंटी जस्टिस है, वो दैट इज नॉट जस्टिस इन द रियल सेंस। जो आपका जो जुडिशियल फ्रेमवर्क जब तक उसको जो है वो नहीं कर देता, अब नहीं मान लेता, आप उसको जस्टिस नहीं मान सकते। आप पॉलिटिकली यस ठीक है, आपने डीरेडिकलाइज कर दिया तो आपने एक तरीके से जो मेन एक आइडियोलॉजी है पॉलिटिकली तो हम बहुत सारे, मतलब जिसकी जैसी आइडियोलॉजी वो वैसे पॉलिटिकली इंटरप्रेट पॉलिटिकली करेगा, उसको इंटरप्रेट लेकिन करेगा। प्रैक्टिकली आपको लगता है कि प्रैक्टिकली अगर नहीं, मेयरली बाय डीरेडिकलाइजिंग जस्टिस बाय हो गया कश्मीरी पंडित के साथ? बाय रूल ऑफ लॉ, बाय द जो जस्टिस का एक डेफिनेशन है, जो जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है, अगर प्योरली उस रियल्म में देखें तो मैं उसको जस्टिस नहीं मानता, मेरे पर्सनल। तो कहने का क्योंकि मतलब ये है कि जब तक लीगल फ्रेमवर्क में जस्टिस ना दिया जाए, जो नहीं कि इस दिया समय जाए, मिसिंग है, एब्सेंस है इस समय, एग्जैक्टली जेनोसाइड के ऊपर कोई लॉ है नहीं, तो लीगल प्रोसीजर की एब्सेंस में, लीगल फ्रेमवर्क की एब्सेंस में जस्टिस नहीं दिया जा सकता, एक बात है। और नॉन रिफाउलमेंट तो दूर की बात है, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं हो। एग्जैक्टली हाँ, तो वो वही बात जो डेटरेंस की बात हम कह रहे हैं, वापस वहीं पे आ रहे हैं। जी तो वो डेटरेंस जी नहीं है ना, वो तो इट इज जस्ट अ थिंग कि भाई अब ऐसे तो जस्टिस ठीक है, आज जो उरी में हुआ उसका भी जस्टिस हमने ले लिया, वहां पे जो पुलवामा में हुआ हमने बालाकोट में भी, तो दैट इज नॉट जस्टिस राइट। दैट्स वी आर डूइंग व्हाट वी आर, दैट्स तो हमारे मिलिट्री एक्शन व्हिच दैट्स इज अ क्वाइट मिलिट्री एक्ट। रिक्वायर्ड, बट दैट्स एग्जैक्टली अ मिलिटरी तो लॉ। हम लेकिन हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं है। हमारा नहीं नहीं, हमारा जो आर्गुमेंट अभी हो रहा है वो कम्प्लीटली लीगल दैट्स जस्टिस टू फ्रेमवर्क। जेनोसाइड विक्टिम कम्युनिटी। एग्जैक्टली हम उस फ्रेमवर्क में बात करें, तो हम अगर उससे डेविएट नहीं हो, हम नेशनल सिक्योरिटी को मिक्स नहीं करें, तो वो जस्टिस नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एग्जैक्टली। It's been a great conversation with you, थैंक यू, Siddharth ji. I'm थैंक यू, so glad that we had this conversation and I'm hopeful कि जिन लोगों ने हमें सुना होगा उन्हें बहुत सरल तरीके में
लीगल पर्सपेक्टिव समझ आए होंगे। अगर ऑडियंसेस में किसी के कोई सवाल हैं जो उनको लगता है कि जिनके आंसर्स उनको नहीं मिले, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए और उनमें से वो सवाल मैं सिद्धार्थ जी को फॉरवर्ड करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशंस में एक बार फिर सिद्धार्थ जी को लेके आए और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर दिलाएं। I will ask you one last question, Yeah, of course, please. and it's a very generic question. Yeah. What would you like to say to the Kashmiri Pandit community? I have to, if I have to sum it up, and this is something which is my belief because मैंने Jews की history को बहुत detail में पढ़ा है. I have seen the way they reclaimed their land and जिस तरीके से किब्बूत बना बना के एक ऐसे जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क में जब जिस तरीके से उन्होंने अपना होमलैंड रिक्लेम किया, एक टाइम ऐसा आएगा जब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भी वो चीज़ अचीव करेगी. तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि आपकी जो अगली कम्युनिटी, आपकी अगली जनरेशन जो है, आप उसको वो चीज़ से दूर मत करें. मतलब अब हो सकता है नितिन, अब मैं जो बात कहूँ वो थोड़ा सा उसका अगर इंटरप्रिटेशन ये भी लिया जा सकता है कि तो बहुत ही मतलब जो है ऑर्थोडॉक्स हैं. कोशिश कीजिए जितना आपकी कम्युनिटी के लोग आपकी कम्युनिटी के आसपास रह सकें, शादियां जो है वो एक सेम कम्युनिटी में हो, एक जो जिसे कहते हैं एक कल्चरल जो एसेंस है कम्युनिटी का वो बचाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपका अल्टीमेट एक ताकत आपको देती है बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए. और जैसा क्योंकि हम लोगों का एक हिंदू रिलीजन में हम लोगों का एक थॉट प्रोसेस बड़ा अलग है, बिकॉज वन वी ओनली थिंक ऑफ फाइटिंग विद आवर एनिमी वंस वी फील कि भाई हम बाकी चीज़ों से हम लोग जो है हम आगे निकल चुके हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत से. तो जब आप एक व्यक्ति जब अपने पर्सनल अपनी कम्युनिटी में हॉबनॉब्ड है, अपने उसमें सब कुछ एक अपने इंटरनल इकोसिस्टम में है, वो फिर जो है उसका कम्युनिटी को लेके जज्बा, एक स्पिरिट, एक पैशन जो है वो बहुत अलाइव रहता है और उसको लंबे वक्त तक जो है उसको जलाए रखना, उस दिए को बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब तक वो दिया लंबे साल तक 50 साल, क्योंकि लड़ाई जो है ऑब्वियसली जब 700, जैसा आपने नितिन जी ने कहा, आज एक 700 साल का एक ऑनस्लॉट है, आज उसको अगर आपको वापस जो है लड़ना है या आपको वापस उस चीज़ को रिक्लेम करना है या रिवाइव करना है, तो उसके लिए चाहे आपका लीगल सिस्टम हुआ, चाहे आपका नेशनल सिक्योरिटी हुआ, हर चीज़ में एक आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक और वेल कैलकुलेटेड तरीके से आप लोगों को मूव करना पड़ेगा. बिकॉज जैसा ज्यूज ने जिस तरीके से चीज़ों को अपना रिक्लेम किया है, हिस्ट्री में प्रेसिडेंट ऐसे हैं, आप लोग भी जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भी अपने ऑर्चर्ड, अपने लैंड, सब कुछ जो है वापस रिक्लेम कर सकती है. तो इस वजह से एक कम्युनिटी कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा बने रहना चाहिए. नितिन, मेरा कहने का मतलब ये है, I mean, I don't want to dwell into any personal thing, I'm sorry, but all I'm trying to say is that feeling of belongingness, Yeah. that feeling of homeland, it should always be there. There should never go, because वो एक बार चला गया तो फिर it's over. Thank you so much again, Siddharth ji, for this wonderful conversation. And हम आपको एक बार फिर लेके आएंगे किसी टॉपिक पे किसी दिन. आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया और हमें आशा है कि उन्हें बातें समझ में भी आई है. I'm sorry नितिन, थोड़ा सा I get a little emotional tangent because मेरे लिए इशू बहुत ही I वो know, है. I know, I know, I know, I know. That's. I mean, I have huge respect for you. In fact, for how passionate you are about this cause, and yeah, I mean, I can just say that we are always there for you. Thank you. Because you've always been there for us. Thank you. So thank you so much once again, and to all the viewers, thank you so much for giving your time to this podcast episode. And we'll be soon back with yet another episode of this podcast, Panditocide Watch, with another guest and an interesting topic to enhance your knowledge further on this subject. We hope that we are serving justice to this theme. And if you have any suggestions or ideas, you can please put them in the comment section. For the one last time for today's podcast, thank you so much, and I'll see you on the other side. Thank you, and Jai Hind, Jai Bharat, Jai Pandic.